India's Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the union budget in the Lok Sabha today. This was Nirmala Sitharaman's historic 8th consecutive union budget in Parliament. The budget focused on measures to ease the burden on the middle class and to boost growth in agriculture and the medium and small enterprises sector. Now, these are agriculture, micro, small and medium-sized enterprises or MSMEs, public and private sector investments, exports and the consumer spending power. Let's take a look at the top highlights of the Union Budget 2025. Starting with the biggest headline, which is a big tax relief for the middle class. The Finance Minister will table the new income tax bill in the Parliament next week, which she says will make the income tax simpler and easier for the common man. Now, the Finance Minister announced that no income tax would be payable for those earning up to 12 lakh rupees under the new regime. The income limit to avail zero tax was earlier at 7 lakh rupees. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. With this, the government also established new tax slabs aiming to significantly lower middle-class taxes. Here are the slabs under the new tax regime now. For those earning up to 4 lakh rupees, won't be paying any tax. Those earning between 4 to 8 lakhs will pay 5% tax. And for those with an income between 8 to 12 lakhs, the tax rate is 10%. For 12 to 16 lakhs, it is 15%. A 20% income tax will be levied on income between 16 to 20 lakhs, 25% on 20 to 24 lakhs, and 30% on those earning above 24 lakhs per annum. Now, the second highlight of the budget was the game-changing announcement for the agriculture sector. The Indian Finance Minister said new measures will benefit over 1.75 crore farmers out of the country. Now, the government announced the launch of a program under the Prime Minister Krishi Yojana, which will cover 100 districts with low agricultural productivity. The government also expanded a loan limit for loans through Kisan credit card from 3,000 rupees to 5,000. The government also announced creation of ample employment opportunities in rural areas through skilling, investment and technology, ensuring migration becomes a choice, not a necessity. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit.
This program is likely to help 1.7 crore farmers. Next, we move on to government's boost for MSMEs and startups. The government has announced increasing credit guarantee cover and ease for access to formal credit for MSMEs and startups. The centre said its focus is on ease of doing business. Customised credit cards with a limit of 5 lakh rupees were also announced to meet the urgent financial requirements of micro-enterprises. The fourth highlight of the Union Budget 2025 has been the focus on the eastern state of Bihar, which is heading to an election this year. The Finance Minister announced a slew of schemes for the state. These included a new Makhana board, which focuses on the cultivation of foxnuts, a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, and also greenfield airports to expand the existing airports. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. The next key highlight is the government's clean tech push, which is being lauded by EV industry leaders. This year's budget brought incentives and benefits for EV and battery makers. Now, the government has introduced tax exemptions for lithium battery production, aiming to enhance local manufacturing and to reduce import dependence. Now, this initiative is expected to make EVs and electronics more affordable in India. The fifth is on the government's nuclear energy mission. The Finance Minister announced that the nuclear power sector will be opened to the private sector. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. And that 20,000 crore rupees will be given for research and development for small modular reactors. Amendments to the nuclear-related acts will also be taken up by the centre. The government has said that India will operationalize 5 small modular reactors by the year 2033. Now, the seventh highlight is the modification of the aviation sector. The government said it will expand its existing Udaan scheme to connect 120 destinations. Udaan regional connectivity schemes. Udaan has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified Udaan scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years.
4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. The Finance Minister said that the scheme will help about 4 crore additional passengers in the next 10 years. And the scheme will also support helipads and smaller airports on hilly, aspirational and northeastern regional districts. The eighth highlight is the government's internet boost and its focus on artificial intelligence. Recognizing the importance of digital infrastructure, the government will extend broadband connectivity to all government secondary schools. Building upon previous AI-focused initiatives, the government announced that it will set up a 500 crore Centre of Excellence in Artificial Intelligence for Education. The government will also expand the total student capacity in 5 of its established after 2014. Now, the ninth is the government's push toward insurance for all by the year 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman, in her budget speech, announced that raising FDI limits for insurance sector from 74% to 100%. A significant portion of India's citizens' insurable assets remain uninsured, increasing the risks of high out-of-pocket expenses, placing a considerable burden on public finances. Now, this raise in FDI is expected to support the cause. The 10th highlight of the budget is the government's nutritional support for 8 crore children, 1 crore pregnant and lactating women. And now let's take a look at Prime Minister Modi's reaction to the budget. आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं।
एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए
क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। And with the top highlights wrapped up, let's quickly take a look at how this budget will impact the prices of certain goods. What's getting cheaper and what will cost the Indian consumer more? Now, mobile batteries, lithium batteries, EV batteries will all be getting cheaper. Other goods getting cheaper will include LEDs, critical mineral and leather goods. Now, exemptions have also been announced on 36 life-saving drugs, which will also be cheaper. And frozen fish paste is also on the list. With duties increased, flat TV screens, plastic products and knitted fabrics will now cost Indian consumers more. We're calling the show Vantage. We hope you like what we've put together for you. Touted as the minimum defense from that video. India's neighbours were the first to send the special edition of Vantage live from the White House throughout the week. Hindu Mandir in we're on our way to Tel Aviv. Pretty measure, but it's also the perfect way to drive. I don't think that Prime Minister of Bhutan, Sherin Tagwe. Welcome to 60% of the world's office. Prime Minister Modi did the iron. We were actually How are you doing? How do you like? It's been 1 year since that meeting. Iron bars separate you from the outside. Out the vote effort. Trump had, it says, and at $4.3 trillion. 4.3 300 billion by 2030. That's what we need to tackle climate change.